Hi all, this is Keshwi from Vocational Learning Academy, and I hope I'm audible. Yeah, good. So we are waiting for people to join. This is 4:05. Maybe wait until 4:10, and then we will get started. Okay. In the meantime, we can utilize this time to get some question and answers from you people. So in the chat, I'm sharing a link in which you can post your questions so that we'll know what those questions are, and accordingly we can address the general questions. Any specific questions, we will take it up later, one by one. Okay, for anyone that has joined recently this meeting, in the chat section, you can post your comments that you may have, and we will take all your questions today. All right, I think it's 4:10. Let's get started. So, welcome everyone. Welcome to Vocational Learning Academy's group call, the first call for internship hiring. And this is just an informal call so that we get to know you. We get to see what your background is, what kind of student profiles are coming in, and also what your expectations are. And similarly, we can also explain what the work is, what kind of of course the on the job work will be different when you're on the
company's side. Right now, let's say it's basically giving you an idea of what kind of work you can expect, and what will be the stipend structure, and how it will progress in the next few months, and what are the options later on from there, and also any kind of extra remuneration if you can expect as incentives, and how that will go forward. And lastly, we for sure would like to keep all of you on board, because we have a mandate of taking about 100. We are going to hire around 100 interns. So in this 100 interns, basically we are having those recruitment drives, and we are kind of being very liberal at the moment with that, because it's we're getting 280 profiles from around 129 cities, with so many different rich backgrounds. So all of that is good, with around 130 universities, or 230 universities actually. So all of that is really a good mix for us also. So we really appreciate all of you, all of your work, and in any way that you feel that from our presentation that you yourself can make a contribution as to how you can help us, what value add you can do for us, it will be really helpful for us. If you already have identified your strong areas that I'm good at this side, and you can reach out to us or send us a message saying I would like to say go on sales more, or I would like to go on the social media side more, or maybe on some kind of content creation side more, then in that case we can accordingly align you people there. So anyone here that is not comfortable with English, you can just write in the chat, or maybe raise your hand if you are not comfortable with English by any chance. Yeah, I think only we have only one person that also saying so, maybe half English, half Hindi. That's okay. So, in case you don't understand anything, please get that clarified from me, right? So, since there's just one person, you can definitely raise your hand. So, just try not to maybe unmute yourself and speak in between, because then the rest of the people get confused in between. So just keep yourselves on mute most of the time, and otherwise we will just see and we will mute you here and there, right? Because other people, for them, it's for rest of the audience, it becomes a bit chaotic to hear two, three voices at the same time, right? So just raise your hand, and we will come back to you and ask you your point, or maybe write it down somewhere or in the chat section, and eventually we will take it up. So this is just just the start of it. Now, what is our plan, right? So maybe I'll just quickly share my screen and myself. So I am Keshvi Sharma. I can share my profile first. First of all, it is about introduction, and this is my LinkedIn profile. I have around 10 years of work experience in core corporate with core consulting companies. So all the MBA schools and the graduate schools, mostly, these are the companies which come there to recruit. So they are EY, Ernst and Young, PricewaterhouseCoopers, PwC, Accenture, and Infosys. So I worked in these four companies, and I've worked in India, UK, Japan, and Canada on different client projects, mostly around the strategy and consulting wing of Accenture. And I was a management consulting manager. And then I left the company to start my own venture, which was this vocational learning academy. And for sure, starting a new company gives me more monetary, wise, it's better for sure. But also at a personal level, it was more of a, personal freedom and seeking joy kind of an experience, where I just wanted to work for myself more and grow it further. So this is my personal venture for next 5 years or 10 years, and I feel since it is an educational company, we want to be more connected with people in the universities, in the colleges, who are currently studying and who can benefit from these courses, and also join us in different ways to contribute even in the company, right? And also get remunerated there. So, seeing this, let's say overall, I started my career in 2008, and I've worked on digital transformation engagements. Now, for those who have not really come across this term, it refers to entire transforming clients completely, their entire IT landscape also. And these are digital finance transformations also sometimes, where completely a tool comes and changes their entire finance back end and the way they work, right? And that gives them
dashboarding view, and that gives their managers a better view about their own company, right? So it's mostly related to CFO and the CEO, the CFOs, because they get their reports better, more accurate, and also on time, and it saves a lot of hassle every month actually of the reporting. And not just for the management side, it also was an exercise where we were basically also helping them on their own cost cutting, like lowering their costs across their company, like a supply chain, by doing supply chain audits and understanding that, because that was my internship. Is I did a supply chain audit in my first internship in IPCA laboratories, where we just went, spoke to different stakeholders in the company and analyzed the data and came up with a report as to why the company was not achieving the sales and what could have been better, how could the planning have been better. Just it was a 2 month internship, so that was enough, I think, initially. So apart from that, I've worked with Reliance, I've worked with Lemon Tree, I've worked with Paytm, Indian Oil, different clients in India. And after that, like directly on the client is something which we prefer for any consulting person. So this is like extra knowledge for you people, not related to our internship, but whenever we go for consulting, mostly we prefer on the job and on site projects. So all my projects were on the site for 10 years, except one project which was offshore. So apart from that, we work on global delivery models, as in multiple geography teams coming together and delivering the projects. Now that was for the past. What I did and how I learned about project management and all of that, handling offshore onshore teams and getting the work done. And then also on the industry side, I've had experience in retail industry, oil and gas, pharma, hospitality, manufacturing, and petchem, right? And in terms of processes, it was continuous close process, or the planning, budgeting, forecasting side, process design side, legal and management consolidation, scenario planning, sensitivity analysis, zero based budgeting, those processes. And there were some tools like SAP related. We have 2 or 3 tools. So SAP was the technical side, and functional side was all of this. So SAP, Hyperion, Anaplan, a bit of Power BI, just maybe for demo purposes, but not really a project on that. So this was overall the you can see the overall entire thing. And then I completed my education in 2008 from Delhi University Hansraj College. So from 2005 to 2008 for 3 years, and then in Symbiosis I was doing my management MBA ITBM for 2 years, and then there were placements and everything. So also went for PMP certification, and eventually, like I realized that after PMO, I should start my own firm, and then this company started, Vocational Learning Academy. So that was enough about me, just to give you some perspective of where I am coming from. Just a second, need to admit some people in the call. Yeah. So. All right. So next, coming to what this profile is about, right? So if you can see the screen, let me know if you can see the screen. Yeah. So basically, coming to what this internship is about. So these 100 people that we are planning to recruit will be mostly working on business development and sales side. Now that means social media marketing side, and also on the growth of the business, like just organic growth or organic sales side, and also related to core sales, as in lead generation up to closure and conversion. Now, overall, everything that entails in this sales side, we will keep. Like it also includes making reels sometime, but not all the 100 people. So out of that, maybe we will choose few people who are good at making reels, who can make some promotional good content for everyone to share, right? And next is some people who are good at social media marketing or website design. Maybe we get them to just redesign our website for some time, some of the assets which we have. And lastly, most of the people, everybody, will all work together for the sales side, and which is the most paying side. Now, for the sales side, it is a work from home job. So, only if you are in Delhi will you be called for the sometimes for the field work. That is, we sometimes have exhibitions happening in Delhi, which are like international trade fair or something like that, and we may have a stall there. In that case, many
international, as in many people come there for the everybody's out there for their own companies, marketing and everything. So we may have our own stall sometime, and we may need 4 5 people max, 3 to 4 people from Delhi NCR, who can help us with that. So that will be the biggest work, because most of the sales and marketing work can happen there itself. So we need really good and strong people to help us with that. And of course we will pay them extra for coming to the exhibition. And primarily rest of the people can work from home. बाकी लोग घर से काम कर सकते हैं. And they can start immediately, like maybe today is Saturday, we are also having a call tomorrow. तो कल भी एक call है. So maybe next week हम लोग process करेंगे. We'll go through your CV again and we will process the CVs, and we will give out the offer letter next week. And then for some people, maybe they start next week itself, because we had a call on 7th, and for them, we may be giving out the offer letters early. So they will start early, and then the ninth ka lot will start later. Right? And after that, let's say, how many months will you be there with us? So you will be there for 2 months initially, and then you can extend it for 2 more months. So eventually 4 months is the internship, and it's based on your schedule. So we are not forcing you for 4 months, but we prefer that if you stay for 4 months, it is a value add for you and us also, because ultimately you will learn in 1 month, and then the next month you perform a little bit and you will leave. So not sure how much, unless you're already trained and expert, which I'm really expecting. Like all of you have spectacular CVs, so I'm really expecting that you can contribute in the first month itself. That would be the best. So first month you contribute, second month, and you can have like a decent, decent internship experience. But after that, if even if you want 2 more months, and we can extend that 2 more months too. So overall 4 months. Then basically, if you wanted to extend it, we can discuss that based on our experience in 4 months and how we go forward. What is your profile and how did we do in that area. We can definitely extend that to a PPO. And that PPO, like I said, minimum for that PPO is around 3.6 lakhs, which is good for say bachelor's people. And for masters people, because we know they have more skills, because they have studied more and they're more mature, they may have some experience also in the past. So we can definitely negotiate more after that, like we can go up to 4.8 to 6 package. And let's say, what is the typical work. So mostly leads. So we have leads from our side also, cold leads, not the warm leads. So many, maybe 200 normal leads, and they are also enough if you are good at sales. But otherwise, we have warm leads and cold leads, and you can basically, the point is to call them up, explain to them about our courses and what the company is doing. And for the people who are interested, either ask them to say download our app for free, and it's a simple thing, just download the app for free or go for a paid plan there. Right? Only two things are there mostly. And then we have many products. As a company, I will explain what we're doing. But overall, just to tell you, as a vocational learning academy, we have around 100 courses around AI, wellness, yoga, meditation, IIT, JEE, Ayurveda, and so many other things. So all of that, basically, I'm sure out of 100, some people will find something interesting in there, right? So we just need to explain that to people, and we were needing many people since we have so many courses, so that they can go and actually take care of that many people to explain to them about courses, and also get the leads converted eventually and get an incentive paid for that. Right? So mostly the process, 90% of the time, the process will be call the lead, or speak to the people or message them. If they are basically on board and they like that, then we call them up, explain to them about the project, or give them the brochure, which is just a message sent, right? We just have to send the message. And if they need some kind of more clarity, we just fix up calls with them. So I can go with you on those calls, and we can together discuss and explain to them the points. And if the lead is converted, then you will get the incentive for that lead. Next is, let's say, how much time we are expecting is roughly 1 to 2 hours a day. Mostly sending messages and responding to WhatsApp messages, and mostly sharing the brochures. Even finding good leads, in the sense, when we say lead, let's just say normal words, right? So normal word is leads, meaning people. We just want to connect with people, actually have a good network of people around us, and any of our friends and family members, our colleagues, we can reach out to them and explain to them about the product also. So it's just that, like, I wanted informal connection between people that you already know,
Like maybe you have a network of 1,000 people already, or if you are a like an influencer or having 10,000 or 20,000 followers on Facebook, then it's easy because you can just post some posts about that, and naturally some interest will be generated, and then you can speak to them, or you can redirect them to the company's customer support or something. So that's one part. Now, how do we do that will be depending upon different companies and the mix of people we have. Like yesterday, we spoke to some people, they already were having a decent, solid base on Facebook. 70,000 easily, their posts were reaching 70,000 or 50, 60,000 anyway. So those kind of things, they already have something set. So it's much easier for them to do the sales. For rest of the people, it's of course there's the processes. We can give you the contacts, you can call them up, and then or you can reach out to your own college people, you can reach out to people in your city in different type of exhibitions, different networking places. So it's up to you, organic, or you want to just do online Facebook or Instagram related ads. Next is, let's say, availability. Yeah. So since we're expecting 2 hours a day, right? Uh, the availability is such that we are planning to have different teams and different timings for the teams, because some people are in bachelors and some people are in the master's zone. Now, masters people may have their own schedule, and that schedule needs to be managed by us, right? So they may be free in the evenings, while the bachelors may be free in the afternoon, between say two lectures or something, or maybe even the evening. So based once we basically send out the offer letters and they are signed and agreed, then we can just agree on common timings, and we will be making three people club together into one team, right? So three people will randomly assign that, or if your friends are there in this list, you can make friends and you can tell us directly that we three want to join and collaborate. Otherwise, we can just go and randomly assign. Then three people groups can then work separately, and let's say out of 100 we have 90 people who are working on sales, 10 people who are working on the social media part, or they are making the reels for us that we are going to share or we're going to show to people, or they were working on the brochure side, which basically other people will be given. So in that case, those 90 people with the which is roughly 30 teams. So 30 teams will touch base every day and explain, like we'll just have an informal conversation every day saying what did we do, or in an Excel sheet we'll just log saying we tried to contact 100 people. This 50 of them responded, for example, 50 need more information, and we will follow up tomorrow. This just itna bhi enough hota hai. So we'll just basically go through all those teams things every day. Anywhere we need more help, we can ask for help in this group. We can also reach out to other people and get that help. So that way, that would be the way of working. Will be a bit informal but accountable, because we here, I think, as part of internship, we also want to learn eventually in the corporate world or in the real world where people work, it's very very professional, and if we are given the task, we do it like at our own responsibility, and if we show that we have done the good work, company sees it, like people will see it, or you tell them that that had happened, and so such and such sales has happened, etc., etc. And then you also get basically good acclaim for that, or some kind of good appreciation for that. Sometimes it's monetary, sometimes it's in kind, so in different ways. So I would encourage accountability, and also the fact that I want a very encouraging kind of culture where we are helping even small level of achievements. We are celebrating every day, saying yes, we've gone forward, that many people have shared, and that many people have been converted, and it's a good thing, and we move forward. So it maintains a good healthy environment of working. So that would be the work culture. And next, let's say what kind of skills we need are the typical skills. Adobe, Photoshop, or Canva, typical for making those marketing, digital marketing creatives. Then cold calling is, I think, it's a typical thing that everyone, all of us know the cold calling part, but we will have a common script, and some people with their own, because if they may be good at talking to people. Yesterday I noticed two or three girls were really good at talking to people, so I already identified that they really will be good for this work. So like that, if they're good at speaking to people, making conversations well, and just general chit chat, and just healthy fun conversations, then that will be the cold calling people. Next, let's say digital marketing, email marketing, of course, right? Email marketing is a bit less here because we use WhatsApp instead of email. Email only if there's some kind of official kind of confirmation. Otherwise, mostly it is WhatsApp as a conversation platform.
Apart from that, Excel, of course, operation meaning everyday's day-to-day things like how we will manage the leads, how we will manage those things will come under operations. With anyway, training will be there. And then SEO. If some people are good at SEO, definitely they will be part of those 10 people who will be doing SEO or Reels part, like one-time work. And social media marketing is ongoing, so almost all of us may have to share reels and find out new Facebook groups where we can post, mostly encouraging people who have those good creative ideas, very funny funky reel ideas, or they know exactly which group will be there, and they can, or they already have, say, let's say 50 odd Facebook groups in their list, and they are already doing marketing for some companies, and they know, and they can share our reel there. So those kind of things. So really wanting to know if you have any kind of experience in Facebook side, social media side, growing of the page, or even sales side, do call out, do let us know, and do speak out about those. And apart from that, let's say, overall, I think the kind of skills we needed were the same: positive attitude, enthusiasm, and professionally growing, good work ethics. And of course, rest of the things are there. you know Engage with audience regularly, or some people, those people who have good ideas of having some campaigns that can generate a lot of buzz between people because it's very catchy and very nice. So those kind of creative ideas, if you can come, even ChatGPT can help you with that. So if you can do those good ideas also, it helps the whole, everyone, every day you can just share, I have this idea, maybe this works, and you can try it out. If it works, then we can share it with other people also, and it helps them too. So overall, I think, what can you partake, like what you can get from that, or what will be the output of this internship, apart from the learning, apart from your on the job exposure, a lot from other things. So one is the certificate which we will give you, then is a letter of recommendation from our side. So if suppose if you have helped us achieve sale of 10 lakh, 20 lakh, right, then we will, this is outstanding work up to say 50 lakh or so, then that is outstanding work, and we will write a separate letter of recommendation and a LinkedIn testimonial for you, saying, where we will call out saying this person has helped us achieve that much sales in this profile of a sales BD profile, and we really appreciated the contribution. Now that itself calls for a good, your entire LinkedIn page, it becomes more credible, and more credible meaning more trustable by other companies or anybody that you come across. If they see that through a company, it definitely makes a difference, and they will hire you, like, in the future for your career. So that is that. So letter of recommendation. Flexible work hours. So flexible meaning, although it is 2 hours, but again, if it is a team of three people, it is up to you. Maybe one person is busy with exams or something, rest of the two can manage. If two people are busy, one person can at least go and share some posts or do some kind of follow-ups with clients, so that the work moves forward. So we can do the load balancing ourselves within the team. That's why it was for three people. Otherwise, I know exams, etc., may come in between. Next, let's say job offer. Yeah. So how does that process go? Is today is 9th. After this call, if you are interested, you can reach out to us and say that I am interested in going forward. And then this is on WhatsApp. You can WhatsApp us on that. Then we will again go through your CV, and if there's any clarification required, we will call you or maybe message you for a different time where we can connect. And after that, we will send you an offer letter, and once you sign it, we can get started. So more or less, all of that intense work we are going to try to finish in this week. But in case, if suppose there are many good people, and out of 100, if we see 150 people, for example, to recruit, then maybe it goes spill over to the next week also. But some people for sure will get their offer letters in this week. Now, what about the pay? So the pay is, fixed pay is this 2,500 a month, but let's say there are incentives. So suppose if there is a product of ours which is for, say, a membership of say 30 courses ka course bundle, where it is 2,500 per month for the customers or the students to pay. Now in that, you get 200 as the incentive for that. Now, max that we have fixed for any person in any way in our company is 1,000 sales, right? So we are aiming max for 1,000 sales. So if you if you are really good at Facebook ads and you can make 1,000 sales, good. Otherwise, you have entire 1 year to make that sales.
but we have an option where you have not just this internship. Even after that, if you're just at your home, but in that one entire 1 year, if you can make 1,000 sales, we will keep giving you the incentive for that. So let's say even if you make 1,000 sales, it is 2 lakh per month. And because the client will pay for 12 months, let's say 12, so you get 24 lakhs as a sales incentive per month. Now the point is, so the amount is good considering, say, bachelor's and masters pursuing backgrounds. The stages we are pursuing that, right? And this is a package for at least 3 years. After 3 4 years in the firm, and a team lead may get today is 24, right? So package wise, it's good, and this is basically sales incentive, completely variable. No, but so it is variable. But the point is, if you make even 10 sales, let's say, right? So based on 200, you get 2,000 every month. So 24,000 anyway you get in the year for 10 sales also. So it anyway, incentives are good. That's why we kept this package in such a way, because it is primarily sales driven, and there is no hard push will come from us. But we do expect at least every month, at least every person should do at least 15 sales of that package, because it is anyway good for everyone that we are that we have in mind. So 15, and let's say even if you do it for 4 months, you can aim. I mean, I am personally saying 500, because that will help you. Let's say even 100, but up to you. Let's say somebody starting out, just very new person, 60 also works, right? So 60 you can expect roughly 12,000 additional incentive for 4 months. And it is again up to you. So you can reach out to influencers, you can reach out to so many other people, and that one by one, and like your friends, your rest of the students and other people. So in that case, it can even be higher than that. So that's the overall thing that we see. Let's say, yeah, so if on a successful conversion to permanent employee, the candidate can expect salary of 2 lakh. 2 lakh is when you are just on rolls, and only the fixed pay is there, then incentive won't be there. So fixed pay and some kind of fixed work, like you are just helping us out with this one aspect only, where there is no sales involved, then it is roughly 20,000, depending upon the performance, or depending upon how you fit in well. And for 360 is basically 30,000 per year, which I'm saying is if you're doing good sales, right? Even if you make say 100 or 200 sales at one go, it is 40,000 per month fixed for 12 years, for 12 months. So it's up to you. I think it's worth the, if you're a student, and I would say if you are just pursuing, right, and maybe you have another 2 years to further to complete your studies. So in those 2 years, if you are with us and you are also helping us with sales, you will enough easily have 40 50 lakhs with you. Now then it is up to you. After that, you want to start a business, or do you want to pay off your student loan, or do you want to purchase a house, or do some other thing, like put it into investments, for example. It is up to you. But at least you have that lump sum and corpus ready before your placements even start. So anyone that is in just first year, second year, it's just a golden opportunity, because anyway you are studying, you'll meet so many people, you'll just interact and casually interact with them. Some people may be interested, they may buy that, and you may have your social media to work on, you may have your internship. So for them it's golden. For people who are in MBA also, it is golden. People yet to pursue MBA and maybe wanting to go abroad, we have another plan where they can have up to 1 CR. But then in that case, we are looking for B2B sales, as in business to business sales, not business to consumer, more like corporate sales and those things. But still, if you are good at sales and you know it yourself, then you can reach out to us and we can help you out with that. Because in that structure, basically the product itself for the companies, for the enterprises, it is 10,000 per month is what they are going to pay us. And for that, the person who is recommending and the person basically who is leading the whole sales, they get 1,000 rupees per sale. So if you do 1,000 sale, again वहाँ पे भी 100,000 की capping है. If you do the 1,000 sale, it is 10 lakh a month. Now I know it may look like a lot from a student perspective, from even a working professional perspective, but companies do that much. So I'm guaranteeing you that you will get that if you're there. But for that, the skills we need are the corporate skills. Like you need to know the companies. We have a database of companies also, like yoga meditation schools, coaching centers, all those companies which have many other say customers coming in for them. So for those people who have live classes, so for them we can help them.
So this multiplied by 12 months is up to 1 crore. Now I know we are not showing usually these things to students because it's mostly for say middle aged or middle management people. But if like yesterday we saw an outstanding person with 70,000, reaching that much. If you have something like that already in a B2B zone and you are planning to go for an MBA abroad or in INSEAD or something, then you can reach out to us because this for students this definitely finances the higher MBA goals for people, and it will be a pleasure for us also to help them achieve that goal, right? So that's overall in terms of remuneration for now. For people who are just starting out, take a deep breath. It's nothing serious, and we are not really forcing you for any kind of sale at the moment. Offer letter is in, like, it's up to you to accept it or not. And apart from that, yes, how much sales you are in for, how much you think you can do is up to you. We can support you. We can support you with ideas. We can support you with the platform. We can support you with all the, like, we already have WhatsApp configured, how to send messages. We have our own SMSs which can go. We have anyway the courses and the package and the delivery of the product ready, and we have brochures which are supposed to be ready, and we are going to make it more youthful, as opposed to more corporate. So we need some people to help us with the brochures also, making it more like attractive and this, so that we can retarget the good ones, the good audiences, and the good students everywhere who are needing help. So overall, I think this is max that we have to explain about this internship. If there are any questions, we can take that from you. So maybe we can go towards the chat section and see what are the questions that we have. So the role and its duration, I think that was answered. No, okay. Offer letter kab milega also answered. Maybe next week you can expect, and definitely this today's people, like everyone that was attending today, they'll get it in this next week. And online or offline work, all everything is online, but offline is for the real sales, as in we have some offline work also. If if you're interested in the sense is, suppose if you're not much into Facebook ads, and you will take some time to learn it, then it's better that somebody already who knows that will take that up. And for offline work, I think it's more of actually setting up meetings with different people. If you are alone in your own city, like we got queries from 130 cities, right? Not everywhere it is IT savvy. Like it could be so many different types of cities in India. So in that case, you can help us make that city itself, like that entire city, may you could be that point of contact for us, where you can go and do the real sales work. Like that could be your, even your future ambition. If you have 2 years and you're studying, maybe let's just city is Vapi, for example. Now we don't have a presence in Vapi. So in that case, you can be that person in your college itself first, starting from your college, putting the posters and some competitions there, some kind of online sessions, and about the application there, some kind of posters, some kind of pamphlets, which would be the offline work. And then eventually you will have a decent amount of people reaching out to you, and then you can speak to them about the course, because this is offline. So you can just speak to them, explain to them about the courses and how they can help you, and then if they are interested, they can buy that course. So that way you get to do the sales, and it's a big thing. If I mean, from the sales side, if a new person like an intern can just be that only person in that city to grow sales, where the company didn't have presence, meaning we don't have already existing sales people or already existing team there. So you could be the first person there, and then even if you can make 100 sales, you become really, sorry, ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो सकता है। अभी मंडे, कमिंग मंडे से भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, है ना? तो ये है बेसिकली, इसको हिंदी में इफ आई हैव टू ट्रांसलेट, वो ये था कि हमें 130 सिटीज़ से पार्टिसिपेशन आई है। सारे 130 सिटीज़ में अभी हमारे ना तो ऑफिसेज़ हैं, ना हम ऑलरेडी जानते हैं किसी को भी।
सो इन दैट केस आप स्टूडेंट्स वो बनोगे, जैसे वापी एक सिटी है, साउथ में भी कोची में भी जाके एक दो और सिटीज थे जो कभी हमने सुने नहीं थे, एंड वहाँ पे हमें इतना अच्छा लगा है प्रेजेंस देख के, पार्टिसिपेशन देख के, कि हमें अब लग रहा है कि वहाँ पे अगर वो लोग जो हैं वो की पॉइंट्स बनेंगे, और वो अगर आप हमें 10 से 100 तक सेल्स अगर आप ला सकते हो, या फिर आप ऐप डाउनलोड ला सकते हो, फ्री ऐप डाउनलोड भी 1000 डाउनलोड फॉर एग्जाम्पल, काफी बड़ी बात होगी आपके इंटर्नशिप के लिए, इवन आपके रिज्यूमे में बड़ी बात। इसमें काम तो सेल्स का ही है। अगर आपने पहले सेल्स किया तो आपको पता होगा इवेंचुअली एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है किसी को। आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके फीचर्स क्या हैं एंड दूसरों के लिए क्या बेनिफिट है। अगर आप ये एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे पास वीडियोस भी हो सकते हैं, इवेंचुअली हम लोग वीडियोस बना देंगे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑडियंस के लिए, इसी टीम में से। एंड देन आपको बस वो वीडियो भेजना होगा उनको, वो अपने आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट क्या है। आपने सिर्फ हाँ, हाँ, तो वीडियो बना के शेयर होगी, वो तो बात की बात होगी कि वीडियो बना के शेयर हो जाएगी। आपको वीडियो, आपका काम होगा कि नए लोगों तक रीच करना है, उनको वीडियो दिखानी है, एंड अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो आपको। हाँ जी? नहीं, कस्टमर नहीं, लीड हम लोग देंगे, लीड हम लोग देंगे। पर आप लोगों को लीड का मतलब क्या होता है, हम आपको लोगों के नाम देंगे और फ़ोन नंबर देंगे। तो आपको पहले हम उनको मैसेज भेजेंगे, और अगर उनका रिस्पॉन्स आता है, तो हम आपको देंगे। आप उनसे कॉल की करेंगे और आप उनसे जाके बातें करेंगे बेसिकली, कि ठीक है। बट आपकी सिटी, ये अलग बात हो गई, ये हो गई सेंट्रली हम जो कर रहे हैं, राइट? हमारे पास सेंट्रल है, अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी हो सकते हैं। एक है कि आपकी सिटी है, सपोज़ वापी आपकी सिटी है, तो वापी में आपको क्रिएटिव स्किल्स लगाने पड़ेंगे कि कैसे हम वापी में एटलीस्ट 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 स्टूडेंट से कनेक्ट हों, और उनके लिए क्या-क्या, जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, या अगर वो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो आप उनको यूपीएससी के मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में बता सकते हो। तो वो जाके यू मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ₹200 का एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और उसके बाद हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं वहाँ पे। तो वो भी एक काम है। पर उसमें इंसेंटिव नहीं है उस वाले काम के लिए। फ्री डाउनलोड के लिए इंसेंटिव नहीं है, अगर वो पे करेंगे, और अगर हाँ, अगर पे कर रहे हैं तो 10% आप मान लो आपका इंसेंटिव, राइट? तो ये है। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, सिंपल है फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दैट, बट फॉर पीपल हु आर न्यू, वी विल हैव टीम्स, मतलब हम लोग 3-3 लोगों की टीम बनाएँगे जो आपस में इन्फॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे 3-3 लोगों की टीम का। एंड उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाके आप लोग जैसे मुझे ऐड कर सकते हो बना के, एंड इन दैट केस आप आपस में डिसाइड कर सकते हो कि हमने कैसे मूव करना है। पर आपने बस ये सोचना है कि हाउ टू कैसे हम 15 ईच, सबको अपने-अपने लेवल पे 15 सेल्स मान लो, आपको 15 सेल्स। हाँ, हाँ, जैसे कि पर्सन ए है, बी और सी है, ठीक है? ए, बी और सी, ए का भी गोल 15 लगा लो, फर्स्ट मंथ के लिए 15 ही लगाओ बस। हाँ, उन तीनों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जाते हैं। हाँ, तो सोचो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, उसमें 3 लोग ऐड हो गए, उसमें 4 हो गई, चौथी मैं ऐड हो गई, राइट? तो 4 लोग ऐड हो गए। आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, राइट? एंड अकॉर्डिंगली मुझे पता चलता रहेगा, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, जहाँ पे बीच में हेल्प कर सकती हूँ आपकी। मैं आपको ब्रोशर्स वगैरह भी भेज सकती हूँ। हुँ। हाँ, लीड मिलेगा, पर आपको, जैसे आपकी सिटी है ना, आपको भी अपनी तरफ से नया कुछ सोचना पड़ेगा। बस मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोग यूथ हो अभी, है ना? आप अभी 20s में हो, अर्ली 20s में होगे। तो आपके पास तो इतने सारे आइडियाज़ हैं, ऑनलाइन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक, क्या-क्या नहीं करे लोग, टेलीग्राम में पूरा फुल वो है। तो आप अगर एक इन्फ्लुएंसर को भी जानते हो ना आपके घर में, आपके सिटी में, कि ये है, ये फेमस है, ये इन्फ्लुएंसर है, वो भी काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम काफ़ी हद तक रीच बढ़ जाती है एक तरीके से। ऐसा, राइट? सो ये है इवेंचुअली। हाँ, बट हेलो। See, so actually we'll go through your CVs and resumes. If you're for before that, we'll like to know that you're interested. So we'll go through your CV at that time, and after that, maybe usually there will not be any clarification required, but we'll just maybe have a 1 or 2 minute call with you, and just to align you ki what role we are planning for you, and accordingly, then we will give out you offer letter. Sorry. Yeah. So product is basically just a second. Now, what the company is about is it's called Vocational Learning Academy. So एक तो Instagram में हमारा है, वरना maybe I can show you.
the website and the type of courses we have. So Vola, VOLA is vocational, VOLA is learning academy. तो वो हमारी मोबाइल ऐप का नाम है. तो एक हमारी मोबाइल ऐप है, राइट, गूगल प्ले पे. राइट. सो ऐप है माई लर्निंग ऐप वोला. एंड इसका हमें फ्री इंस्टॉलेशन लोग कर सकते हैं. 100 फ्री वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस मिलते हैं उनको एआई के बारे में, सस्टेनेबिलिटी एंड सारे अच्छे टॉपिक्स के बारे में. एंड इसके अलावा उनको 50 एआई के इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस मिलते हैं जो यूज़ कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं. वेबिनार्स होते हैं हमारे बीच बीच में स्ट्रेस के बारे में कि कैसे स्ट्रेस को कम्बैट करें. फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं. तो ये 3 टाइप की चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है और फ्री डाउनलोड है आपका. नाउ इसमें अगर आप ऐसे देखोगे कई बार लाइव कोर्सेज हो सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि लाइव कोर्सेज आ रहे हैं, आपको इसको प्रमोट करना है या फिर ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हो सकते हैं. अगर आप देखोगे अराउंड 97 कोर्सेज हैं. आईआईटी जेई कैट के बारे में है, स्किल के बारे में है, राइट, एसएससी, बैंक एग्जाम्स, फिटनेस के बारे में, जनरल स्टडीज, योगा, आइल्स. हाँ जी. हाँ. हाँ, देखो मैं हम आपको कोर्सेज लाके दे सकते हैं एसएससी के ऊपर, है ना? फिर आपको प्रैक्टिस. हाँ. हाँ, तो नहीं, सो डेफिनिटली सी हमारे पास भी ट्यूटर्स हैं ऑलरेडी. हाँ, हाँ, हाँ. सो बेसिकली हमारे यहाँ हो सकता है, सी सो बेसिकली अगर आप ये देखोगे ना, तो इसमें काफ़ी सारे आईआईटी वगैरह के भी जो कोर्सेज़ हैं वो उनके द्वारा बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी फ़ेमस हैं. मतलब उनके भी कम से कम लाखों फॉलोअर्स होंगे कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे, और वो काफ़ी सालों से करते आए हैं ट्रेनिंग. एंड ऐसे ही बाकी सारे एग्ज़ाम्स के भी हैं. और हाँ, मिल जाएगा उसपे। डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के मिल जाएँगे। इसके अलावा लेट्स से आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के, बैंक के एग्ज़ाम्स के, कॉलेज एंट्रेंस, सीबीएसई है ना? ये वाले बीकॉम वगैरह के भी थोड़े बहुत हैं। थोड़े-थोड़े हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आप देख रहे हो, यूपीएससी होगा वगैरह। इसके अलावा हिंदी मीडियम देखना पड़ेगा एक बार। तो इंग्लिश होगा फॉर श्योर और एक हिंदी होगा। हिंदी के लिए हम आपको चेक करके बता देंगे। एक्चुअली नहीं, नहीं। सी सो मैं आपको बता दूँगी। मैं समझ गई, आप बोल रहे हो कि इन जनरल लैंग्वेज का ऑप्शन होता है टेस्ट में, बट ये जो मॉक टेस्ट है, हमने जो उसमें इंक्लूड किए हैं अपने खुद के कंपनी में, वो इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं, वो मैं आपको चेक करके बता दूँगी एक बार। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है आप लिख देना, ठीक है? क्योंकि असल में तो होते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स आप जब देने जाएँगे तो होगा। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मिलेगा। वो देखिए, वो आप उस पे छोड़ दीजिए, जो हमारे ट्यूटर्स हैं, उन पे छोड़ दीजिए, वो काफ़ी दिग्गज हैं। पर मैं लैंग्वेज का पॉइंट समझ गई कि उनका वहाँ तो होता है, हमारे पास है कि नहीं? मतलब हम इंग्लिश में ही ऑफ़र कर रहे हैं कि हिंदी में भी कर रहे हैं। तो वो एक मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा और मैं मेक श्योर करूँगी कहीं न कहीं से कि आपको हिंदी वाला भी उसमें इंक्लूड हो जाए इवेंचुअली। अभी नहीं है तो 6 महीने में इंक्लूड कर लें, है ना? क्योंकि मैं अब समझ रही हूँ कि सब जगह इंडिया में इंग्लिश शायद ना चले। तो हिंदी तो कम से कम हम इंक्लूड करना चाहेंगे अपनी तरफ से। जी, सॉरी। ओके। सो सी अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये बेसिकली आप देखोगे कि स्टूडेंट ज़ोन में तो सारे के सारे ही मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए काफ़ी हद तक। देन इसके अलावा हम ये भी दे रहे हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस दे रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया में काम करते हैं उनको पता है कि अराउंड 1000 इमेजेस. हाँ, 30 डेज़. सॉरी, एक्चुअली आपकी समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। कैन यू रिपीट दैट? शेयर मार्केटिंग नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली शेयर मार्केटिंग नहीं है।
हम्म। हाँ, सेल वाला वही वही शेयर नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ, कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड शेयर मार्केट यहाँ पे नहीं है ना। सीधा सीधा है, कोर्सेज हैं, आप उसको सेल कीजिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, सिंपल जस्ट। सो वो है। सो लेट्स से इसमें 1000 इमेजेस का हुआ, कॉपीराइट के आपको प्रॉब्लम, कॉपीराइट को हटाने के लिए इमेजेस का है। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ टेस्ट का भी है, हमारे पास एक हेल्थ टेस्ट है जो कि हम चाह रहे हैं कम से कम 1 लाख लोगों को हम पहुंचाएं। और वो हमारा पर्सनल लेजिस एक इनिशिएटिव हो गया, जिसमें पर मंथ लोग 500 रुपये पे करेंगे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 500 पे करेंगे। उनको 6 टेस्ट का एक्सेस मिलता है, 6 टेस्ट, और वो 12 महीने के लिए पे करेंगे, तो टोटल 6000 का कोर्स है। पर उसमें उनको 10 या 8 टेस्ट मिलेंगे, और वो टेस्ट उनको अपने बारे में जानने में हेल्प करेंगे, उनके बिहेवियर्स के बारे में। और वो उन बिहेवियर्स पे जैसे जैसे काम करेंगे, कम से कम 200 डिफरेंट इंडिकेटर्स हो गए बिहेवियरल, कि कैसे हैं, मतलब आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, आपका मेंटल एबिलिटीज कैसा है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे। तो उसके हिसाब से जब वो 200 क्वेश्चन आंसर करेंगे, अपने आप उनको अपना एक इतना ऐसा स्कोर मिलेगा, जो एक एक पॉइंट उसका इतना इंपॉर्टेंट होता है स्कोर का, कि आपको अपने बारे में इतने सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपने करेक्ट करने हैं अपने बारे में, निजी निजी लेवल पे, मतलब अपने खुद के पर्सनल लेवल पे, राइट, ना कि किसी करियर रिलेटेड। एक कोर्स जो है ये वो होने वाला है, मतलब ये हमें काफ़ी लोगों को तब पहुँचाएँगे, तो लोगों को बहुत हेल्प होती है इससे। क्योंकि उनको खुद को पता नहीं पता होता कई बार कि स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको अननेसेसरी तनाव हो रहा है, या उनकी नींद डिस्टर्ब्ड हो रही है। पर जैसे वो टेस्ट लेंगे, फिर उनको पता चलता है, फिर वो ध्यान देना स्टार्ट होते हैं कि चलो नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, कंसंट्रेशन भी नहीं बन रही है, तो कहीं न कहीं अंदर कुछ वो ध्यान देने की ज़रूरत है हेल्थ पे। तो जैसे ही फिर वो हेल्थ पे ध्यान देंगे, विद इन 1 ईयर धीरे-धीरे उनके वो सॉर्ट आउट होना लग जाएगा। तो ये डेफ़िनेटली एक हेल्थ का प्लान तो बनता ही है, और ये टैक्स उसमें आ जाता है। आपका अब तो स्टूडेंट्स हो, पर अगर कोई टैक्स फाइल करता है, तो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है 50% का। पर ये मेरे मेरे ख्याल से तो आप आँख बंद करके ये वाले से तो स्टार्ट कर ही सकते हो। किसी कोई भी ओल्ड एज 30 या 40 ईयर ओल्ड से ऊपर कोई है, तो आप उसको बता सकते हो कि 400-500 से, मतलब पर मंथ सिर्फ उतना है, पर उसमें आपको ये भी मिल रहा है, और साथ-साथ आपको कुछ स्ट्रेस के सेशंस मिल जाएँगे ऑनलाइन, कि कैसे हम योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेस के सेशंस, जिससे वो अपने आप को और ज़्यादा तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ये है, राइट, एंड देन ऑफ कोर्स ये वाले हमारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारे खुद के प्रीमियम प्लान्स हैं। तो ये मेनली है हमारा प्रीमियम प्लान, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रमोट करना होता है। सो इसमें एक है जो 2500 पर मंथ वाला प्लान है, जिसमें 30 कोर्सेज मिलेंगे उनको, प्लस वेबिनार भी मिलेंगे कुछ, प्लस उनको कुछ एआई के वीडियोस मिलेंगे, कुछ कूपन्स मिलेंगे, डिस्काउंट कूपन्स। सो एक बंडल सा बना हुआ है, एक पैकेज टाइप का। और वो भी खुद जो आप जिनको रेकमेंड करेंगे, सपोज आप अपने पेरेंट्स को रेकमेंड करते हैं, अपने अंकल आंट्स को रेकमेंड करते हैं, फिर सपोज आप अपने कॉलेज में कुछ अपने फ्रेंड्स को करते हैं, या टीचर्स को रेकमेंड करते हैं कभी, अगर आपके फ्रेंडली हैं कुछ रिलेशंस टीचर से, तो इन दैट केस बेसिकली जो उसका 10% है वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस आपके टीचर्स भी फर्दर अगर रेकमेंड करते हैं, तो उनको भी सेम पैकेज मिलता है जैसे आप लोगों को, कि वो भी अगर 100 या 200 को रेकमेंड करते हैं, एंड अगर वो डाउनलोड करते हैं, तो इवन दोज पीपल कैन मेक मनी, मतलब वो लोग भी अपने लिए एक पैसिव इनकम कहते हैं इसे, कि हम जी रहे हैं लाइफ, बट हमारा हमने एक सोर्स बना लिया जिससे हमें एनीवे पर मंथ इनकम मिली जा रही है, क्योंकि हमने एक फोकस टाइम लगा के एक सेल्स कर लिए, और अब हमको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे हर महीने हमको इनकम आता है उससे। तो वो था, पर वो सैलरी अलग हो गया। ये हो गया कि आप हमारे लिए एज अ ऑन रोल एम्प्लॉय भी नहीं हो अगर, तो भी आपको मिलेगा वो सेल का जो आउटपुट है, जो अभी आप सेल करेंगे। सिर्फ 4 महीने का नहीं है, वो पूरे 12 मंथ्स तक आपको आउटपुट मिलता है उसका, ठीक है। एंड अगर आप उसके अलावा हमारी हेल्प और कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, सोशल मीडिया की या और रीच बढ़ाने के लिए, तो वो एक अलग लेवल पे हम आपको वो करते हैं, सैलरी के तौर पे अलग से आपको रखते हैं बाद में। तो वो नाउ बस यही है मोस्टली, जैसे सबसे बड़ा जो कोर्स है वो यही है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना। इस ये प्रोफेशनल सा है, जिसमें हम सर्टिफिकेट भी देंगे। एंड इसके बाद कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका भी इजीली 30-40 हज़ार का कॉस्ट सेव हो जाता है ना। और वो हमें सिर्फ ओवरऑल ये तो 2 ईयर इंस्टॉलमेंट का कोर्स है, बट अदरवाइज 15-16,000 में वो अपना खुद का कॉस्ट भी बचा रहे हैं, 20-30 हज़ार का, प्लस वो और दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं बैठ के, राइट, आगे जाके फ्रीलांस वाली। तो वही 50,000 से 1 लाख के आराम से, अगर वो अच्छे हैं सेल्स में, अगर सीख गए स्किल्स, तो वो वहाँ पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उनका भी
जैसे यूएस में अगर आप ऑनलाइन डालोगे फाइवर वगैरह पे, तो आपको $1500 की अच्छी वेबसाइट, अगर आप एक बार परफेक्ट हो गए 1-2 साल को में पायलट्स बना के, तो आप वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से वेबसाइट बना के दे सकते हो। सो अगेन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो ही नहीं तो इंडिया में भी 1-1 लाख के तो ई-कॉमर्स के वेबसाइट लोग इन्वेस्ट करते ही हैं। तो अगर आप असल में समझ गए, तो आप 1 लाख के वेबसाइट भी बनवा सकते हो एज़ अ करियर लेटर ऑन, या आप कंपनी अपनी खोल सकते हो खुद की, है ना? ऐसे और काफ़ी सारे हैं। गेट स्टार्टेड बंडल है 35,000 का, मतलब पर मंथ 3,000 ही है इसका। तो जस्ट 3,000 पर मंथ में वो 20 आवर्स लर्निंग के मिलते हैं और 5 कोर्सेज़ मिलते हैं उनको। सारे जो कि एक आजकल के एकदम इन कोर्सेज़ हैं, और वो कभी भी बिज़नेस स्टार्ट करने से चूक मतलब उनको कभी डर नहीं लगेगा स्टार्ट करने से। उनको बेसिक स्किल्स सिखाई जाएँगी उसके लिए। एंड देन जीआरई है, देन इसके अलावा आइल्स है, किसी ने अगर इंग्लिश ट्रेनिंग करनी है उसके आइल्स के कोर्सेज हैं, जीएससी रिटर्न वगैरह के हैं, काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं अपनी तरफ से। सो आप डेफिनेटली मतलब आप इसको गो थ्रू करें। मैं आपको लिंक बाद में भेजेंगे, एक बार ऑफ लेटर आपका वो हो जाता है, साइन पूरा साइंड ऑफ हो जाता है, एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड कि इसमें से कौन से कोर्सेज को हम लोग आपकी कंपनी में या आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या फिर आपकी सिटी में किसकी ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। कहने को ये 2 लाख का एक कोर्स भी है, 100 कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के इसमें, है ना? तो ये भी आप कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली, एंड लेट्स से आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम मी, मतलब ये मैं अपनी तरफ से आपको यही बता सकती थी आज फर्स्ट उसमें। तो एक बार क्वेश्चंस एक बार वील गो थ्रू। ड्यूरेशन आल्सो हैंडल, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क हैंडल, या so next procedure is to basically tell us that you are interested, हमें आपने like if you got the WhatsApp message from number 922 is the starting, called Vocational Learning Academy, you can reply back to that message and say either I am in, but I am in meant for the call also, but apart from that you could also write down that I am interested, right? Then we'll know that you're interested in going forward after hearing the entire things that we had to explain. Then we will reach out to you in the next week, but that's the only step. From your end you have to say I am interested. From our end we have to just go through your CV, clarify anything if you want, and then we have to assign a team based on all the people who have joined the offer, and we will send out the offer letter. See, we can start next week itself, from 11th or 12th we can start. But for that, basically, I mean, after these questions, right, after these 1 or 2 minutes that we want to spend on questions, I want to go through an individual introduction of all of you who are there, like 16 of you. And based on that, I'll know like what is the mix of talent. And accordingly, we can move forward and give out offer letters earlier. Like in the last meeting, I knew 4 or 5 people were interacting a lot, and they were very enthusiastic also about this internship, and they were also knowing a lot of influencers, and they had a network, or they were new and they could help out with cold calling. So let us know where you can help out, what is your strong point in sales and marketing and everything, or even content creation, and just take 1 or 2 minutes for yourself and अपने बारे में आप explain कर देना पूरा, so we'll know, like, right? So just give me 1 minute, एक बार we'll go through the questions, and then all of us will just one by one try to introduce ourselves, right? So teaching vacancy actually is not there, Saida, but do let us know in these 2 years of experience what kind of topics you are in your introduction. Just let us know what topics were there. Similarly, Ashika is interested, good to hear. And then let's say Tamil. So my native is Tamil. Can you please interact more in English? Okay, understand. So see, so what I understand is we have interest coming from 130 cities in India, and not everybody speaks Hindi. Not everybody speaks, say, Malayalam or Telugu or even Tamil. So I'll stick to English so that everybody will understand. But still, if there is someone that is not getting anything at all, please reach out and we'll see what we can do for that, right? तो एक और बार हिंदी, जस्ट फॉर द हिंदी ऑडियंस, बिकॉज देयर वाज समबडी हु वाज इंटरैक्टिंग इन हिंदी, इज कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको हमें बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, एंड तब हमें पता चलेगा कि आपको हमें फॉरवर्ड लेके जाना है। देन हम आपका सीवी देखेंगे, 1-2 दिन में कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू,
एंड देन हम आपको ऑफर लेटर देंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, बोलना है येस आई एक्सेप्ट, एंड उस ऑफर लेटर को ईमेल में वापस आई एक्सेप्ट करके वापस करना है बस। एक ईमेल आएगा जिसमें एक ऑफर लेटर का एक पीडीएफ आएगा, आपने उसको डाउनलोड करना है, साइन करना है, एंड देन आपने वापस हमें भेज के आई एक्सेप्ट करना है उसमें। बस इतना था प्रोसेस, एंड देन उसके नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे एक्सेल शीट में, एंड वो जो 3-3 के ग्रुप्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करके दोस्ती यानी बेसिकली कहने का मतलब है दे गेट फ्रेंडली विद ईच अदर, दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, आइस ब्रेकर्स एंड ऑल दैट, एंड देन इवेंचुअली वंस यू नो ईच अदर वेल, एक बार आप जान गए अपने ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को, और एक बार आपने एक एक होता है वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी मैच करा है वहाँ पे, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगेगा काम करने में। देन आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे आगे जाना है, कौन पोस्ट कर रहा है, कौन बना के भेज रहा है रील, किसको टारगेट करना है, आप आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप लोगों का टारगेट बस मिलेगा, हम लोग आपको अपनी तरफ से टारगेट दे देंगे फर्स्ट वीक में सोशल मीडिया पे फोकस, राइट। सो 7 डेज सिर्फ रील बनाइए। मैंने ये सोचा कि सिर्फ हमारे कोर्सेज को गो थ्रू करिए, लिंक्स को, और जो वेबसाइट वाली टीम है वो वेबसाइट बनाती जाएगी, उसको अपडेट करके अच्छी बनाती जाएगी, पर कोर्सेज सेम रहेंगे। तो आप लोग कोर्स को गो थ्रू करोगे और उसके बेसिस पे आप रील बना दो अपनी तरफ से। 5-5 सेकंड के रील भी चलते हैं, 5 सेकंड के, 10 सेकंड के रील, ताकि हमें पता चलेगा आपको आता है, समझ आया कि क्या है वो प्रोडक्ट। तो आप मुझे भेजना, मैं ओके करती हूँ पहले इनिशियली रील, सो दैट आई विल नो दैट यू नो वट एवर यू विल बी सेंडिंग, जो भी आप बाहर भेजोगे मटेरियल, एटलीस्ट आपको समझ आया और मुझे भी पता है कि ये यही है जो है, तब हम आगे भेजते हैं, राइट। सो वो एक बार कंफर्म हो गया तो फर्स्ट 7 डेज पर डे हम 5 या 10 रील्स बनाते हैं, बस इतना ही काम करेंगे, स्मॉल छोटा, राइट। नो सेल्स, थोड़ा बहुत लीड्स को थ्रू कर सकते हैं, अगर जो ऑलरेडी सेल्स में बहुत अच्छे हैं वो आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनका जिनका एम 1000 सेल उनको पता ही है, वो कर लेंगे, वो सीधा हमको रीच आउट करो कि मुझे डायरेक्टली सेल ही करना है, एंड हम उनका एक सेपरेट ग्रुप बना देंगे, तो वो डायरेक्टली सीधा सुपर फास्ट उसमें चले जाएंगे। बाकी जो लोग हैं, हम लोग सारे पहले रील्स को गो थ्रू करते हैं, रील्स देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक 2 लोग ढूंढेंगे अपने लाइफ में, जस्ट 2 पीपल। हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे अंकल आंटी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, राइट। सब इजी है, स्टार्ट एट होम। हम 2 लोग ढूंढेंगे, हमारे फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, आपका एक फ्रेंड भी हो सकता है, राइट, आप आपका स्पाउस भी हो सकता है। तो 2 लोग ढूंढेंगे जो कि इन कोर्स से बेनिफिट करेंगे, एंड वो कोर्स होगा 2500 पर मंथ वाला, जिसमें 20 कोर्सेज मिलेंगे उनको, एंड उससे उनको ऑप्शन मिलेगा कि ठीक है सेल्स के लिए रेडी है, ठीक है, जस्ट 2, and then we go forward and say next let's plan 5 sales next week, and then when we go and we will share say contacts with you, एंड आप उन कॉन्टैक्ट्स को कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स भी करते हो, 200 कॉन्टैक्ट्स भी करते हो उस वीक, तो चांसेस है कि 5 तो आप वो कर पाओगे, राइट। 5 या 10 तो कर ही लोगे उस वीक में। देन नेक्स्ट वीक वी ट्राई 10, आपको और स्किल आ जाएगा, तो लेट्स ट्राई 10 नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक हम और ज़्यादा लीड्स देते हैं, आप 400-500 लीड्स को मैसेज भेज के वो करेंगे, या फिर उनको डायरेक्टली कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप इन सम वे, राइट। एंड देन इवेंचुअली होपफुली यू विल मेक 10, एंड देन इवेंचुअली 10-20 करके मंथ में अगर आपका 10 या 20 हो गया है, देन वी विल कॉल यू अ गुड इनिशियल सेल्स पर्सन, कि यस, है ना, कि आपने स्टार्ट किया, गुड किया। नेक्स्ट मंथ वी विल ट्राई टू इंक्रीज दैट टू 50, एंड से कि हम 50 कर सकते हैं, एवरी वीक वी डू 10 to 15 कंसिस्टेंटली, एंड अगर हमने 50 और ये इतना कर लिया, देन वी जस्ट एम फॉर 50 मोर, एंड आपकी इंटर्नशिप ना 4 मंथ्स में इफ यू डन 100, तो आई वुड से वेरी गुड माना जाएगा काफी हद तक, राइट। दिस इज ऑल, मतलब हम विल बिल्ड स्लोली, बट जिन को भी लग रहा है कि इट्स अ बिट टफ, प्लीज स्पीक आउट एंड प्लीज टेक द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स फॉर योर सेल्फ। सो आई जस्ट कॉल आउट द नेम्स, मैं एक एक करके नाम कॉल आउट करती हूँ, एंड आप बस अपने बारे में 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या व्हाट्स योर इंटरेस्ट बेसिकली, व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द 34 Aromal S. So is that your name, 34 Aromal S? Hello, hi. Ha. Did I get your name right? Aromelo. Okay. And where are you from? Okay, nice. So can you just explain to us in 2 lines, like what your experience is or what are your strengths and how you can help us in this project?
All right, sure. So, do you have any experience in social media marketing in Facebook, or maybe just on lead and how to follow up with the leads? All right. Okay. Can you help us? Like, do you know around 100 students or your own batchmates, right, in your university that can help us with, maybe they be interested in IIT courses or small mock tests or something like that, where they can, at least avail those courses and download the app basically, or maybe just download the app for free. Like, are you aware one by one? Are you in touch with those? Okay. Okay, sure. So, all right. I think it's about, actually, let's see. So, if you can, if we have the leads, if you can call them up, explain to them let's say we try to find leads in your city, then you try to call them up and explain to them about courses. And maybe about, or even about the free plans that we have, and just ask them to download. Could you do that? Yeah, so you're good, as in you're enthusiastic about that. Good, nice. And let's go to now Ashika Sadiq. Hi Ashika, are you there in the call? Yeah, Ashika, आप कॉल पे हो? Okay, let's move on to Akanksha Munde. Are you there on the call? Yeah. Acha, you can directly go and meet the people also if needed. Okay. Okay, okay. I think we not need field work in so much field work in say other cities, but for sure, if you can help us out with new just some kind of marketing buzz in that city, in the sense, ki just try to find maybe 100 or 200 people who can download for free, but they are all students, so that ultimately IIT and these things eventually, even in the future, it may help them. So, right. Yeah, I think for you, this would be the best. One is lead one, and the other is to maybe we'll give you some posters. You can print it out and put it in the college notice boards, or try to find some kind of marketing places, like in a mall somewhere. Yeah, support is good. You good. This is good. Or all right, I'll let you know. Next is Ashika. Yeah, yeah, thank you. And Ashika, hi. Sorry, we thought you were not on the call. So, can you please spend 1 or 2 minutes explaining about yourself and how you can help with the sales, or what are your areas? Okay, suppose if our social media channel is roughly 10K at the moment in Facebook. If we wanted to increase that, like how would you suggest we can increase that to maybe say 50K? Can you take that up? Like if I give you the responsibility that in these 3 to 4 months we need to make it to a 50K channel, can you do that organically?
Yeah, 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 yeah. Okay, okay. So I'll catch up with you then. In that case, if you're interested, like I can see in the chat, you have said you're interested, right? So with you and Aromal, I will maybe touch base with you tomorrow or day after, and then we will finalize the future. Okay, yeah. Let's move on to Akanksha. Akanksha, are you there? Okay, so let's move on to Akshay. Akshay, I think we spoke yesterday. So Akshay is there. Then let's say Alpana Gupta. Are you there? हाँ, आप इंटरेस्टेड हैं इसमें? आप शायद कल भी अटेंड किया था आपने 7th को। ठीक है। हाँ, हाँ जी। हाँ। सी एक्चुअली कोल्ड लीड है, पर अभी मैं आपको ये हुँ। हाँ, तो आप एक काम मतलब हमारा कैसा होगा प्रोसेस कि फर्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे, जैसे हमें भी आता है, तो हम लोग पहले कंपनी को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारी कंपनी एक लॉन्च हुई है, नया हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अभी 100 कोर्सेज़ के साथ, और ये कंपनी जो है वो एसोसिएटेड है एक बड़ी कंपनी के साथ जो कि क्लास प्लस है और उसका 250 सीआर का रेवेन्यू हो रहा है, राइट? तो वो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे जा रही है, 60 मिलियन की फंडिंग ली है उस कंपनी ने भी। एंड वो कंपनी सौरभ गांगुली जी भी एसोसिएटेड है उस कंपनी से, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, राइट? तो उनको बताएंगे कि ट्रस्टेड कंपनी हमने नया लॉन्च किया है, अपना वोकेशनल लर्निंग अकेडमी, और उनकी कंपनी हमारा टेक वाला हैंडल कर रही है, राइट? एंड देन हम उनको बताएंगे 90 को 100 कोर्सेज में अराउंड आईआईटी और बहुत सारे यूपीएससी वगैरह के लिए हैं। देन हम उनको पूछेंगे कि आपको क्या इंटरेस्ट है एआई रिलेटेड या इसमें से किसी भी टॉपिक पे या इवन मल्टीपल टॉपिक पे आने के लिए, या फिर फ्री, हमारे यहाँ 100 एजुकेशनल वीडियोस फ्री हैं इस ऐप पे, क्या आप उस पे फ्री एजुकेशनल कोर्सेज आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो, राइट? हम आपको लिंक भेजेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और आप चेक कर सकते हो उसे। तो अगर वो येस बोलते हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उस जोन में और येस बोलते हैं, तो आपने सिर्फ उनको मैसेज भेजना है लिंक्स के साथ और फिर फॉलो अप करना है कि आपने डाउनलोड किया कि नहीं, बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने डाउनलोड किया है। तो हमें बस जाके चेक करना है कि ये इतने दिन के 10 लोग आने थे जिन्होंने ऐप डाउनलोड करना था, या 20 लोग या 100 लोग। एंड अगर उन्होंने ऐप डाउनलोड किया है, हम ग्रीन बनाएंगे एंड हम उनको मैसेज भेजेंगे, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। हाँ, आ जाएगा। उन्होंने ये है। हाँ, 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 हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो कर सकते हैं। मतलब अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो उनकी साइड की प्रॉब्लम है कि बेसिकली कट कर सकते हैं, पर वो नहीं बोल सकते एकदम से कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं, राइट? सो ये है, क्योंकि हमें भी मार्केटिंग के काफ़ी कॉल्स एनीवे आते हैं। हाँ, हाँ। तो सी जो फ्री वाला साइड है ऐप का, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोर्सेज़ हैं। हाँ। हाँ, नहीं एड्स हमारे चल रहे हैं। हमें था कि आप लोगों को जो लाने का पॉइंट ये है कि आप ऑलरेडी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, आप ऑलरेडी स्टूडेंट से ही टच में हो, राइट? तो आपको ज़्यादा पता है कि स्टूडेंट्स को किन टाइप के कोर्सेज़ की नीड है, एंड इवेंचुअली ये हेल्प भी कोर्सेज़ को उनको ही करना है कि आगे करियर में हेल्प होना है। तो आपने हम सोचे थे आप ऑर्गेनिकली कम से कम अगर 10 या 15 लोग भी जानते हो,
आपकी सोशल नेटवर्क में से, और पहले आप उनसे स्टार्ट करते हो कि ये डेफ़िनेटली ये कोर्स उसको हेल्प होगा। हाँ, हाँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक्चुअली एआई का चैटबॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि एआई चैटबॉट अपने आप कंटेंट फीड करने के बाद बता सकता है लोगों को। तो हम स्टार्टिंग में ही पहले एआई चैटबॉट पे रीडायरेक्ट करके बोल सकते हैं कि आप इसमें से देखो आपका कहाँ हुआ और कहाँ जाना चाहते हो, तो कैसे हमारे कोर्सेज़ हेल्प कर सकते हैं, है ना? हमारे पास अगर है कि नहीं वैसा कोर्स। एंड देन अगर वो इंटरेस्टेड है तो रीच आउट करें एंड आप लोग कॉल कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। दूसरा मैं सोच रही थी, दैट इज़ वन ट्रैक। दूसरा ट्रैक है कि लेट्स से इफ वी कैन समहाउ टुगेदर, राइट? सो इफ वी आर 100 पीपल एंड आउट ऑफ 100 पीपल इफ वी कैन ऑल eventually matlab after in a month's time, if we can all get around 100 people, like just at your level, if you know 100 people, nahi to we have cold database, उसमें से if you can just reach out to let's say 1000 or 2000 people, ठीक है, on call, and eventually 100 people download the app, then you know कि 100 people are anyway interested, then you just focus on, so first month just reach out to 100 people who can download the app for free. नेक्स्ट 3 months speak to those 100 people and then ask them कि उनका क्या क्वेरी था और कौन सा कोर्स है, एंड देन जस्ट गेस द सेल्स, क्योंकि वंस दे आर इंटरेस्टेड दे डाउनलोड, दे विल नीड दैट कोर्स बिकॉज दे हैव सीन द। हाँ, है। सो हम वो कर सकते हैं। हाँ, इनिशियली फ्री हमारे पास है, कुछ 100 वीडियोस फ्री हैं, एजुकेशनल वीडियोस 100 फ्री हैं इस ऐप पे। तो आप यही बोल सकते हैं, आप डाउनलोड करिए, 100 एजुकेशनल वीडियोस इंग्लिश में हैं, फ्री हैं। एक टेस्ट है, फ्री है, और एआई के इमेजेस 50 इमेजेस फ्री हैं। तो वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो फ्री कंटेंट देखने के बाद उनको अगर आईआईटी वगैरह भी देखने का शौक है, आईआईटी में आगे बनाना चाहते हैं, यूपीएससी, रेलवे के एग्ज़ाम्स या कुछ भी, टेक कोर्सेज़ भी करना है, देन इट हेल्प्स देम। एंड देन वन्स यू हैव 100 पीपल देयर फ्रॉम दैट लिस्ट, 100 या 200, आप सोचो 500 सोच लो कि इनिशियल डेढ़ महीने में 500 लोगों को आपको टारगेट करना है कि एटलीस्ट फ्री में ही डाउनलोड कर लें। एंड देन उन 500 में से अगर आप 100 कन्वर्ट भी करते हैं, इवेंचुअली उनको जस्ट कॉल करके पूछना होगा एक आध बार, राइट? हमारा स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज हो सकता है हमारा, जो हम दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, वो रेफरल ही है एक्चुअली। तो वो जो, हाँ, है। जो रेफर करेगा एंड उनके थ्रू जो डाउनलोड करेंगे वो उन्हीं के साथ के रहेंगे। सपोज़ अक्षय जी आपने 500 को रेफर किया है, जो वो जो 500 में से जितने भी लोग हैं जो हमारे डेटाबेस में हैं, जो हमारे कंपनी में हैं, वो आपका इंडिकेशन कहीं न कहीं रहेगा उसपे, राइट? एंड उसके बाद हम उसमें वो रखेंगे कि नहीं, सो एक्चुअली उसका नहीं मिलेगा, जैसे अगर वो सपोज़ 100 आपके थ्रू लीड्स आ गए उसमें। अब न ऑर्गेनिकली हो सकता है कि वो खुद ही रैंडमली उनको नीड आ गई लाइफ़ में, राइट? किसी ने कहा चलो आईआईटी कर लो, उन्होंने सोचा लेट्स सी इस ऐप में से शायद 1-2 मॉक टेस्ट लेके देखते हैं, शायद मुझे हेल्प हो जाए और मैं देखता हूँ मैं कहाँ हूँ उसमें से, एंड अकॉर्डिंगली प्लान करता हूँ कि करना है नहीं करना आगे आईआईटी। तो अगर वो आके आईआईटी टेस्ट करते हैं, तो वो तो उनकी खुद की नीड हुई, खुद ने डिज़ायर किया और खुद ने बाय कर लिया। वो उनका हो गया, वो किसी का सेल्स नहीं हुआ। बट अगर आपने अपनी तरफ से उनको इनिशिएट किया था, कॉल किया था कि एक्चुअली अगर आप देखोगे मैं उस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हमारा ये नया प्रमोशन चल रहा है इस कोर्स का और आपको इतने डिस्काउंट पे मिलेगा अभी, राइट? अगर आप अभी करते हो, और अगर वो अभी इंटरेस्टेड हैं, सपोज़ वो 6 महीने बात करना चाह रहे थे पर वो अभी रेडी हो गए क्योंकि प्रमोशन है और आपका कॉल भी आ गया, है ना? वो सिर्फ डिले कर रहे थे पर आ ही गया कॉल, तो उन्होंने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आपका सीधा-सीधा आपके उसमें आ जाता है। हाँ, आई थिंक परचेज़ का है पर डाउनलोड का नहीं है अभी। डाउनलोड का नहीं है कुछ। सो हमने ये सोचा है कि हम सबको एक कूपन कोड देंगे। जैसे आपके नाम का हो जाएगा अक्षय 101 फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो आप जो भी शेयर करोगे उस पूरे क्रिएटिव में या लिंक में या कहीं न कहीं लिख देना कि इसको आपको अगर सपोज़ 20% अवेल करना है, सपोज़ 5% डिस्काउंट पे है ये कोर्स, अगर आपको अवेल करना है तो मेरा नाम मतलब ये कूपन कोड यूज़ कर लीजिए। तो उनको तो ब्रांडिंग हो जाएगा आपका कि आपके थ्रू आए, हमें भी पता चल जाएगा आपके थ्रू है और उनको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वो वाले रूट से पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा बिकॉज़ हमें पता होगा कि हर कोर्स सेल में कौन से वाले में आपका गया है। देन सपोज़ मोमिता इज़ देयर तो मोमिता के नाम पे मोमिता 10 करते हैं। सपोज़ कूपन कोड का नाम वो है मोमिता 2025 तो देन वी विल नो कि मोमिता के थ्रू कन्वर्ट हुआ है सेल, राइट? हेलो, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो ना आपका नाम मैंने आई मीन आई जस्ट टूक एन एग्जांपल एज़ योर नेम। सो हाँ, हुँ। ओके, क्रिएटर मतलब कि ऑनलाइन दे आर ऑलरेडी लाइव मतलब दे हैव अ गुड नेटवर्क। हाँ, हाँ। सो देखो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप जैसे 10 ऐसे क्रिएटर्स से टच में आओ और उन 10 को आप हमारा वो प्रोडक्ट दोगे जिससे वो भी सेल कर सकते हैं, राइट? जैसे कि आप उनको ऑनबोर्ड करोगे एज़ एन इन्फ्लुएंसर एज़ लेट्स जैसे हम उसको एजुकेशन एम्बेसडर बोल रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे एजुकेशन एम्बेसडर की तरह आप उनको ऑनबोर्ड करोगे, तो आपको तो 10 का सेल का मिल जाएगा, राइट? क्योंकि 10 लोगों ने इवेंचुअली आपके थ्रू डायरेक्टली 10 लोगों का कनेक्ट हुआ है। और वो 10 जब अपने सोशल मीडिया पेज पे करते हैं और अगर सपोज़ 1000 या 2000 सेल आ जाता है, अगर वो 1 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले हैं, तो अगर 2000 सेल आ जाता है, तो वो उनको जाएगा। अगर वो हमारे प्लान पे हैं, एजुकेशन एम्बेसडर वाले पे, तो उनको जाएगा, राइट? जैसे कि लेट्स एग्ज़ाम्पल क्लियर कर देती हूँ। एक अक्षय है, एक से एरोमिल है। अभी अक्ष ना एरोमिल इज़ लेट्स से पार्ट ऑफ आवर कंपनी। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छा लगा। हुँ, हाँ, तो 2 ऑप्शन है, जैसे हमारा ना रेफ़रल का जो है काम, उसका सीधा-सीधा हमें ये लगाना है, अगर जो सेल हो रही है, अगर उनके पास एक ही आदमी का कूपन कोड गया है, ठीक है? और उस आदमी का नाम है, लाइक उस पर्सनेल, सेल्स पर्सनेल का नाम है उसके अंदर। तो अक्षय समथिंग समथिंग लाइक 1 2 3 4 एंड सेकेश्वरी 2 3 4 5 एंड सोना 1 2 3 4 राइट? सो 3 कूपन कोड बनेंगे, सेम टाइप के उसके डिस्काउंट कूपन के मोर और लेस, राइट? एंड अगर आपने अपनी क्रिएटिव दी है उनको इन्फ्लुएंसर्स को कि यही एज इट इज रील या क्रिएटिव को आगे भेज दो शेयर कर दो बस तो अगर उन्होंने बस शेयर की है एंड कोई नया स्टूडेंट है उन्होंने देखा उनको आपका कोड दिखा उस पूरे शेयर्ड प्रोफाइल में है ना तो आपके नाम डालेंगे वो रेफरल में डिस्काउंट के लिए तो डायरेक्टली आपको मिलेगा फिर सेल है ना ना कि किसके थ्रू शेयर हुआ पर अगर आपके नाम का भी एक कूपन कोड है एंड देन आपने दो चार इन्फ्लुएंसर्स को और सजेस्ट किया और उनका उन्होंने भी डायरेक्टली जुड़ना चाहा कंपनी से एंड उनके नाम का भी हमने एक दो और बनाए जैसे पर्सन वन एबीसीडी पर्सन टू एबीसीडी तो जो एंड यूजर है उसने अगर इवन दो वो आपके थ्रू वो इन्फ्लुएंसर्स थे पर वो तो थर्ड पर्सन है उसने पर्सन 1 2 3 4 की एड देखी और वो कूपन कोड डाला तो वो हो जाएगा सिर्फ वहाँ पे राइट मतलब कंपनी को वैसे समझ आएगा सिर्फ कूपन कोड से समझ आएगा कंपनी को कि किसके थ्रू सेल हुआ है ना कि किसने जो चैनल जो होता है हमारा ऑफलाइन नेटवर्क नहीं समझ आ पाएगा। हम्म हम्म हाँ 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 हाँ
हाँ, अच्छा, अच्छा दैट वे। हाँ, आई थिंक वो हो सकता है। अगर ऐसा है कि आप सपोज़ 10 या 20 इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हो और उनका नेटवर्क एक बार आप बताना कितना है। तो अगर उनका नेटवर्क सपोज़ अच्छा खासा है, हर रोज़ पोस्ट कर रहे हैं। सो देखो आई वुड सजेस्ट इस केस में बेस्ट आंसर होगा कि जो नैनो क्रिएटर्स हैं या इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा आई वुड से 10,000 से ज़्यादा तो मैंने नोट किया है कि 10,000 में ज़्यादा इतना मूव कुछ होता नहीं है इतने फॉलोअर्स का। हुँ, एक्चुअली अब हमें व्यूज़ से ज़्यादा हमें चाहिए था कि जो सच में है ना जाके या तो शेयर कर दें आगे, शेयरिंग का एक नेटवर्क हो ताकि ज़्यादा रीच बढ़े कम से कम या फिर ऐसा कुछ हो। हाँ। तो इन दैट केस ठीक है आई थिंक ये यही कर सकते हैं उस केस में आप वैसा करना भी इनिशियली आप फॉर एग्जांपल जॉइन हो गए। हाँ नहीं फॉर श्योर आई थिंक वो हम कर सकते हैं द ओनली पॉइंट इज आई थिंक आप बेटर ये होगा इनिशियली कि आप जैसे 20 इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो या 50 मैं तो कहूँगी 50 या 100 इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड कर लो जो भी हम लोग रील बना रहे हैं आप उनके थ्रू अपने कोड के थ्रू शेयर करवा दो लेट्स सी कि क्या उससे फीडबैक क्या आता है पूरा अगर उससे दो चार भी कन्वर्ट होते हैं और अगर उनको लगने लगता है कि क्योंकि उनको तो इनिशियली शेयर ही करना है बनाना नहीं है नया कंटेंट पर अगर उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके ज़्यादा हम उनको यही एग्री करेंगे कि अगर ज़्यादा काफ़ी 100-200 डाउनलोड हो गए, तो हम उनको भी ऑनबोर्ड कर लेंगे साथ में। हाँ, फिर उनको अपना सेपरेट कूपन दे देंगे, आपको सेपरेट दे देंगे। अ, हुँ, आई थिंक बेनिफिट तो हम यही दे सकते हैं कि हम उनको सेल्स इंसेंटिव ऑफर कर सकते हैं एज़ अ बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट या तो इंटर्नशिप वाला रूट है अभी या फिर एक हुँ। हाँ, आई थिंक वो डायरेक्ट जॉइन करना बेटर होगा दैन पे आउट क्योंकि फिर मैं उनको वो सजेस्ट करूँगी कि अगर उनको लगता है पहले तो उनका चैनल देखना होगा। अगर ऐसा है कि कंसिस्टेंटली काफ़ी लोग आ रहे हैं और एजुकेशन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और हमें लगता है कि 1000 तक के सेल मतलब बहुत ईज़ी है उनके यहाँ, तो हम उनको ऑलरेडी एक ही प्लान वो वाला बता रहे हैं प्रॉपर वाला, फिर उनको वो आईआईटी और वो सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर बेस, कस्टमर बेस ऑलरेडी है। तो वो डायरेक्टली सिर्फ़ एक प्रोडक्ट फ़ोकस्ड एड्स बना के डाल सकते हैं एंड जितना भी उससे रेवेन्यू आएगा जैसे मैंने आपको बताया था 100 का 20,000 आ जाता है, अगर 1000 होता है तो 2 लाख आ जाता है, वो भी 1 महीने का नहीं मतलब पूरे साल का आता है। तो वो उनके लिए अपने आप बहुत बड़ी रेम्युनरेशन है। अगर 1000 सेल भी करते हैं, सपोज़ 1 मिलियन फॉलोवर है, 1000 सेल भी हुए, तो वो तो उनको 20-24 लाख ईज़िली मिल ही गया अपनी तरफ से नया वो भी एडिशनल इनकम। तो वो रेम्युनरेशन हो जाएगा। हाँ, नहीं वही है, उनका रेम्युनरेशन वही है एक्चुअली बिकॉज़ हम हर रोज़ नहीं चाहेंगे कि वो डिफरेंट मतलब बेसिकली हमारा काम ये नहीं होगा कि हर रोज़ एक डिफरेंट रील बना के डालें। वो होगा कि महीने में 1 रील पोस्ट कर दी एंड उसका रिस्पॉन्स देखा एंड देन नेक्स्ट लेट्स सी कैसे बना। तो वो एक है। बाकी आई थिंक टाइम की क्योंकि कमी है, हमें अभी 5:30 हो गए राइट? बट वी हैव नॉट
हाँ, आई थिंक आप अभी अक्षय अगर आप ये नोटिस कर सकते हो कि कितने आपके जान-पहचान के स्ट्रेट अगर आप 10-15 लोग जान सकते हो, जो कि एनीवे ये प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, राइट? मतलब या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उनको ये प्रोडक्ट अगर आप सजेस्ट करते हो, जो कि हमारा था। हाँ, हाँ, वो तो फॉर श्योर मतलब राइट। नहीं, नहीं, व्हाट आई या ऑलराइट सो अग्रीड सो लेट्स से कि ये कॉल अभी बाद में इसको विल टेक इट ऑफलाइन है ना अलग से डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक वाला केस कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे हैंडल करना है अलग से एंड बाकी तो आई थिंक आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन हेल्प एवरीवन कि कैसे कूपन्स जाने वाले हैं हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड व्हाट द वर्क विल बी मोस्टली राइट हाँ नहीं नहीं सी सो अक्षय एक्चुअली अभी ये डिस्कस सेपरेटली कर लेते हैं इसका अभी तक तो सिर्फ डायरेक्टली कूपन कोड है और एक लिंक है हमारे पास राइट वही हम डील में डालेंगे हाँ या आई थिंक अभी यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं क्वेश्चंस राइट लेट्स टेक अदर क्वेश्चंस बाकी के तो आशिका एंड 34 अरोमा हैव रेज्ड हैंड्स so apart from say moving forward to introductions is there any other point you'd like to raise मतलब आई एम अवेयर कि सब लोग बोल रहे होंगे कि आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शंस पे लेट्स मूव ऑन बिकॉज ये वन ऑन वन हम सेपरेट ले लेंगे राइट ऑलराइट आई थिंक इट्स वो भूल गए अपना हैंड हटाना सो लेट्स से नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोमिता आर यू देयर yeah so Momita can you just explain about your experience in one or two lines and how like with which field you're more called to like where you would like to contribute. Okay. 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 So can you help us with offline sales? Like one is online, as in calling people up. One is that like we may have list of 10 to 100 people which you call up, and then you can ask them to download the app, etc. And then eventually, if they download the app, that counts as like a good thing for us, right? And the next is basically if you can in your own college if you can print out our brochures or posters and you can put that in the notice board after talking to the authorities saying we have some new courses online courses that can help people and just put it out and then if more queries come in you can handle that query. Acha, VIT Vellore. So if you can, let's see if we can. No, I'm sure. See, as part of my Delhi University and SCIT or symbiosis experience, always we used to have something new and different happening on the notice board where there was always some kind of some competition happening or some kind of session happening or some kind of new courses. Acha, okay. Okay, okay. That also works. If you can somehow, if you're part of that, or you can get in touch with that academic team within your college that can help us maybe post one or two posts about our courses that can help people somewhere. Like, they can help the students.
Yeah, I think that's the best. I think that's the best. If you can somehow, just try to raise brand awareness in that case in your college, so that people know the name of the company and the courses that they have. And also, if they're interested in some kind of external, like internship or a job opportunity later, they can reach out to us, right? Yeah, that will help. Like if you can aim that from your side, you can plan to have in these 4 months, thousand. You can have 1,000 free downloads of the app. That also works for us. Okay, maybe just try how can I reach out to 1,000 people and ask them to download the app. Just keep asking yourself that question. Some new creative ideas may come, and try to also because you're in the student zone right now, and everybody needs good education. Just try to reach out to those people. Just try to connect with people somewhere here and there. So I think that would still help. Yeah. One is calling up and the other is this aspect, because right, because you're lacking that the Facebook or the online marketing or influencer experience. So this is the best, right? All right. And thank you. So next, moving on to MVK. Hi, are you there? Hi, may I know your full name? Vivek Kumar. Vinay Kumar. Okay. So Vinay, can you help us maybe with one or two sentences about yourself? Good evening. Okay. Mm-hmm. All right. So you're most interested in the social media marketing or designing some good reels and content, right? For us, okay. Posters and some authentic reels also. Some, can you get? But can you do it yourself, or do you need help from someone else, or you can just record your own reels and say make some explaining things about the courses or something. 1 minute videos about it. Acha. Editing videos and making reels. Okay, sure. So moving on, let's say to Santushti. Yeah, hi Santushti, are you there on the call? So, can you please share your experience with us? Mhm. Okay, okay, okay. And in where in Haryana are you from? अच्छा, okay, कुरुक्षेत्र सुना है. एंड तो आप वो बता सकते हो कि हाउ आप मतलब आप कैसे हेल्प कर सकते हो? आप बीबीए में भी हो इस वक्त? ठीक है, सो कंप्लीटली फ्रेश है बेसिकली, है ना? सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया चैनल कुछ हैंडल करते हो या अपना चैनल? ना हाँ, अगर आपको बोला जाए कि 1000 फ्री है, वैसे लोग किसी को पे नहीं करना है, बट 1000 ऐप डाउनलोड करना है सोशल मीडिया के थ्रू या जस्ट नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग के थ्रू या आपके व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज स्प्रेड कर सकते हो, तो आप कर पाओगे? है ना? तो आपका फिर पूरा मतलब मैं ये बोलूँ जो भी एकदम स्क्रैच से फ्रेशर्स हैं सेल्स में, अगर आप बस इतना भी कर सकते हैं कि 1000 डाउनलोड्स करा सकते हैं ऐप के
एंड आपके पास सोशल मीडिया पूरा फ्री ही है, तो अगर उसके थ्रू कंटेंट उसके थ्रू कि आपको ना तो हम मनी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उस अकाउंट पे, इन द सेंस कि हम ना कुछ पे कर रहे हैं, ना ऐड का पे करेंगे, ना किसी चीज का पे कर रहे हैं, जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन सम कनेक्ट, सम काइंड ऑफ शेयरिंग, राइट? तो इसका मतलब है एक्सटेंसिव शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी सोशल मीडिया पोस्ट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? तो अगर आप वो भी कर सकते हो और आप एम करोगे कि 4 महीने में 1000 तक आप एम कर सकते हो कि 200-250 करीब एक महीने में, तो बहुत अच्छा है। फिर वो ये इंटर्नशिप आपकी होगी। हम्म। हाँ, तो आप पहले एक काम करना, 2 लोग ढूँढना जो इंटरेस्टेड हैं पहले। जस्ट 2 लोग जो 2000 या 3000 पे करने को रेडी हैं। तो अगर आप वो फ्री डाउनलोड 1000 डाउनलोड वाला भी नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि 2 लोग पहले ढूँढ लो जो कि ऐप डाउनलोड भी नहीं, जो 3000 पर महीने पे करने को रेडी है 1 साल के लिए और उनको कोर्सेज़ मिलेंगे 20, एंड देन आप उसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो आप अपना पूरा वो कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो कि कैसे आगे जाना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा क्लूज़ मिलते जाएँगे। तो एक तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यही होगा कि हम पोस्टर्स दे सकते हैं आपको, आप पोस्टर्स लगा सकते हैं अपने कॉलेज में या कॉलेज के किसी ग्रुप में शेयर करवा सकते हो पोस्ट। इस तरीके का कुछ, या कोई इन्फ्लुएंसर है उसके थ्रू ऐप डाउनलोड, सपोज़ आपके जान-पहचान में कोई 1 लाख फॉलोअर्स वाला है, तो आप उसके थ्रू शेयर करा सकते हो एंड देन अगर डाउनलोड हो गए ऐप तो अच्छा ही है ना? ये था। ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू सोना। आई थिंक लास्ट है ये आज के। श्योर। या थैंक यू। या थैंक यू। या सो एनीबडी दैट वांट्स टू लीव, जो भी लीव करना चाहते हैं आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, ऑलमोस्ट हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए एक ही है, अगर आप इंटरेस्टेड थे पूरे उसके बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि क्या है प्रोडक्ट, क्या है रोल, आप आई एम इंटरेस्टेड करके उस व्हाट्सएप मैसेज पे डाल दीजिए वापस। ओके। सो सोना, कैन वी गेट स्टार्टेड? आप एक दो लाइंस में अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? गुड। All right. And suppose if you heard that we have courses, we have free downloads of the app, we have some webinars also sometimes. So let's say if you were to, if suppose if I'm giving you two aims, one aim is get 100, app downloads for free first, right? And then go talk to them and ask them if they need anything, any of the courses of out of the 97. So just explain to them later and maybe just help them out with the purchase and finish entire process. So you will be comfortable process wise, you're comfortable, right? Now coming to how you can go to that 100 or 1000 sale is what you should, since you're already in the sales field, just try to make a name that somewhere I need to get 1000 downloads for the app first, 1000 or maybe more than that, let's say 2000 downloads, and then out of that let's try to have at least 1000 sales. So है ना? So if I give you, let's say, for 20 days in 1 month, initial first month, let's say every day there are 100 people that you're calling. Okay, every day you're calling 100 people and 100 or 150 based on your schedule, and then eventually in 1 month it becomes 2000 roughly, right? तो उसमें से लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग, होपफुल होगे कि आपका तो हो जाएगा कि 1000 डाउनलोड हो जाए फ्री, राइट? स्टूडेंट्स हैं जो भी, एंड देन 1000 को फिर हम नेक्स्ट मंथ कॉल करेंगे एंड उन 1000 में से धीरे धीरे कॉल करते करते व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या ब्रोशर शेयर करेंगे, एंड हो सकता है उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए, राइट? तो वो प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट मंथ में हमने कॉल्स करने हैं काफ़ी सारे, फिर वो जो कॉल्स करके जितने लोगों ने डाउनलोड किया है और जो नए हैं, अगर बहुत ही कम ने डाउनलोड किया है, तो हम डाउनलोड्स के लिए बस ऑन ही रह रहे हैं। मतलब हम हर हर जगह वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर द पोस्ट
so that someone or the other is just sharing in your network, and eventually people download. Once we have so many downloads, then we just go and call them up, and then we go for the conversion. So if you can do that, then it's a very good profile. Yeah, no, we will be providing your number. All right. So I think this is it. So Sona, if you're interested, you can write down in the on our WhatsApp message if you received for the call. Just write down that I'm interested, and we will then process. So yours, I think I'm sure we are processing, and now it's up to you to accept, because you already have sales ka experience or the on the practical side also, at the CRM side, at the calling side, right? And if you have some more colleagues or friends of yours which are also looking for an internship with incentive of our type, then definitely share it with them also, because we have application deadline of another week now. So if they want, they can also join. You can give them the meeting link for tomorrow. So today's 9th. So tomorrow also we're having a meeting. Yeah. Yeah, or maybe just on your WhatsApp, just share that there is. I've come to know that there is a walk-in drive of a recruitment drive. Yeah, I will write down the WhatsApp number here. WhatsApp number is 92207199994. Right. So on this number, yeah, and you can just share a message for of this meeting link on your WhatsApp to everyone, saying there is a walk-in drive for internship happening in this company, and if you're interested, you can reach out to us. They can just message us on WhatsApp that I am interested, and I got to know about it from Sona, or they can directly just join that meeting tomorrow, and within that meeting itself, if they are interested, they can show. Yeah, all right. Thank you. Yeah. All right, Satoshi, let's close the call.